कब आ रहे हैं वापस आप? I don't know why the Union Minister of India is labeling 94.7 Indian youth as Pakistanis. Are you an anti-national? You can go on my Twitter. I have not deleted any single tweet like Raghav Chodha did. Why are you so scared? इतना सब कुछ गलत होने के बाद भी किसी का रेजिग्नेशन तक नहीं हो पाता है, तो कल को ये लोग कुछ भी कर सकते हैं. You will take complete responsibility of peace. You think you would want to meet the Prime Minister when you are here in India? I don't think the Prime Minister would like to meet me. बल्कि हम लोग ये भी देखेंगे from this movement, CJP as a political party fighting elections in India. देश कुछ चंद लोगों का नहीं है ना, और कब तक डर कर जिएंगे हम? What we saw in Bangladesh, what we saw in Nepal, is there a possibility that we see the same thing in India as well? I don't need the certificate from the BJP about my patriotism. Many people have been doing this murmurs, talking about it, that you are funded by Aam Aadmi Party. एक काम करते, इलेक्शन बंद कर देते हम. इलेक्शन ही क्यों करवाए फिर? आपका फेवरेट कौन है मेन स्ट्रीम मीडिया में? तो मुझे लगता है वही उनका सेटलमेंट का तरीका है कि चुप बैठ जाओ वरना देख लेंगे. और ये जो लोग आज बोल रहे हैं मूवमेंट्स खराब होती है, इमरजेंसी के वक्त ये क्या कर रहे थे? So what kind of financial arrangement do you have? पहले ये तो रिजाइन कर दे. यानी लिस्ट और लंबा है. Well, it took us some time to finally catch hold of a cockroach. इतनी जल्दी से हाथ में आने वालों में से है नहीं, तो बाकी बहुतों को इंटरव्यू दे चुके हैं, लेकिन आज फाइनली मिस्टर अभिजीत दिपके is here with us here on News the Truth NTT. Abhijeet, thank you so much for your time. Thank you, Damal. I'm really sorry I couldn't get here earlier. It was just caught up in too much legal stuff. Legal stuff, what was going on? You know that the account has been withheld, so and I'm in the US, so I have to, do all the paperwork from here. And apart from that, I was also getting some threats. My family was getting threats, so have to look after that as well. Your family is safe now? Yeah, they are safe. You have shifted them from your usual address to some other undisclosed location? Yeah. Why are you so scared? Because they didn't make this choice, right? They didn't make this decision. It was my decision to speak up. And I don't think my family should be dragged into it or they should face the consequences for it. I'm prepared for whatever that happens with me, but I don't want my family to get into trouble because of what I have chose. अभिजीत, अभी तक ऐसा कुछ हुआ है आपके परिवार के साथ जिसके लिए आप और ज्यादा चिंतित हो गए? नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं, बट जो मुझे मैसेजेस आए थे दोज वर रियली स्केरी. एक बंदे ने मुझे वीडियो भेजा अपना कि तेरे घर पर पहुंच ही रहा हो, एंड ही वाज नियर बाय, और कह रहा था कि तेरे माँ बाप का एड्रेस मिल चुका है, आई एम जस्ट रीचिंग देयर, शाम तक तू देख क्या होता है. सो वो सब देखकर थोड़ी चिंता हो रही थी, बट आई थिंक ये सब तो टैक्टिक्स होते हैं डराने के, धमकाने के, ताकि हम चुप बैठ जाए. पर हम चुप भी नहीं बैठ सकते, हम बोलते रहेंगे. तो ये जो बंदा ने आपको ये मैसेज भेजा, the person who had sent you this message, could you identify him? Was he a troll? Did he have a face? Was it a real account? नो, आई रिसीव दिस ऑन व्हाट्सएप, और नंबर है मेरे पास उसका अभी भी. मेरे पास सारे स्क्रीनशॉट है उसके अभी भी. अच्छा, तो उसने आपने जो कोई वीडियो भेजा है पुलिस वो भी है. अच्छा, आपने पुलिस के पास कोई लिखित कंप्लेंट, कोई ईमेल कुछ किया आपने? यस, मैंने पुलिस को यहाँ से ईमेल किया एंड दे हैव सेड दैट दे विल टेक एक्शन, सो आई एम होपिंग दे विल टेक एक्शन. Which police? महाराष्ट्र पुलिस. महाराष्ट्र पुलिस. ओके. अभिजीत, जस्ट अ क्विक बैकग्राउंड, वेयर आर यू फ्रॉम? लोग बहुत कुछ जानना चाहते हैं आपके बारे में, आपके इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर रहे हैं, भरोसा करना चाहते हैं. तो भरोसा तो सच्चाई की बुनियाद में होनी चाहिए. तो आप हो कौन, कहाँ से हो, क्या पढ़ाई कर रहे हो, और आगे का क्या विजन है आपके लिए, देश के लिए क्या विजन है आपका? मैं महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर के टाउन से हूँ. एक छोटा टाउन है. मेरी आई वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप देयर. मेरी स्कूलिंग भी वहीं पर हुई है. उसके बाद मैं पुणे चला गया था अंडर ग्रेजुएशन के लिए. वहां से मैंने मास कम्युनिकेशन किया, और उसके बाद मैंने 2-3 साल आम आदमी पार्टी के साथ काम किया. और वहां पर 2-3 साल काम करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इससे तो अपनी ज़िंदगी नहीं चलेगी. तो मुझे लगा कि बाहर जाकर मास्टर्स की डिग्री लेनी चाहिए, और वहां जाकर एक बेटर जॉब, बेटर लाइफ में भी मिल सकती है, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं. तो पिछले 2 साल से मैं बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, पब्लिक रिलेशंस में मास्टर कर रहा था. ओके.
और उसके बाद क्या क्या प्लानिंग थे आपके टू सेटल डाउन इन यूएस टू डू समथिंग देयर? व्हाट वाज योर प्लानिंग फॉर योरसेल्फ? ओह यस टोटली, मतलब मैं तो 1 हफ्ते पहले तक जॉब्स के लिए अप्लाई, सॉरी 2 हफ्ते पहले तक तो जॉब्स के लिए अप्लाई करा था, ये सब शुरू होने से पहले। तो मैं तो वही वो हम्म। एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे जॉब मिल जाए और फिर मैं यहाँ पर कुछ करने लग जाऊँ। लेकिन इंटरेस्टिंगली ये हुआ कि जैसे-जैसे ये मूवमेंट बड़ी हो गई, तो उसके बाद कुछ लोगों को मेरे बारे में पता चला, तो अब मुझे जाकर जॉब ऑफर्स किए जा रहे हैं। बट अब मैं वो जॉब्स नहीं ले रहा हूँ सिंस आई हैव टू कम बैक टू इंडिया। Okay, and that brings me to the moot point. You are coming back to India. That is the breaking news of today. आपने खुद सोशल मीडिया में डाला है आपने कि आप इंडिया वापस आ रहे हैं। कब आ रहे हैं वापस आप? When are you coming मैं back? 6 जून सैटरडे को इंडिया सुबह लैंड करूंगा दिल्ली एयरपोर्ट, और वहीं Okay. से मैं पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाऊंगा, जहां पर हम पुलिस से परमिशन सीख करेंगे कि हमें प्रोटेस्ट करने की परमिशन मिले। और उसके बाद हम जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करना चाहेंगे, जस्ट टू डिमांड द रेजिग्नेशन ऑफ द एजुकेशन मिनिस्टर, जिनकी वजह से 5 बच्चों ने सुसाइड की है और लाखों बच्चे, नीट के 22 लाख, सीबीएसई के 17 लाख, देन सीयूईटी के और 16 लाख, ऐसे 50 लाख से ज्यादा बच्चों को जो प्रॉब्लम हुई है उसकी अकाउंटेबिलिटी तो फिक्स होनी चाहिए, किसी को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो उसके लिए जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग एक पीसफुल और डेमोक्रेटिक वे में हम डिमांड कर सकते हैं वो हम करेंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं हम प्रोटेस्ट करेंगे। हम्म। अभिजीत दिप्के के अलावा सीजेपी पे और कौन-कौन है? सीजीपी में हमने जो पिटिशन लॉन्च करी थी टू डिमांड द रेजिग्नेशन ऑफ द एजुकेशन मिनिस्टर, उस पर 8 लाख से ज़्यादा सिग्नेचर आ चुके हैं। हमारी वेबसाइट पर 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने एज अ रजिस्टर्ड मेंबर साइन अप किया है। उसके अलावा हमने परसों ही इंस्टाग्राम पर एक वॉलंटियर रजिस्ट्रेशन फॉर्म शुरू कर दिया था, जो अब इंस्टाग्राम ने हटा दिया है फॉर सम रीजन, हमें नोटिस नहीं दिया है। लेकिन उस वॉलंटियर रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर हमें 40,000 से ज्यादा लोगों के रिस्पॉन्स आ चुके थे विद इन अ फ्यू आवर्स। यू आर सेइंग इंस्टाग्राम आपका एक पोस्ट खुद से हटा दिया? एक नहीं, 3 हटाए। अच्छा। तो कोई 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 explanation as why are they moving your post? नो नो एक्सप्लेनेशन, दे आर जस्ट टेकिंग इट डाउन। What do you suspect? आई थिंक इट्स ऑन द गवर्नमेंट्स ऑर्डर, क्योंकि इंस्टाग्राम जो भी करता है गवर्नमेंट के ऑर्डर पर ही करता है। बट एटलीस्ट वी होप दैट हमें कोई नोटिस तो मिले, कुछ एक्सप्लेनेशन तो मिले। कुछ नहीं है, इंस्टाग्राम खुलकर देखते हैं पोस्ट गायब। अच्छा। अब अभिजीत एक चीज तो है कि आप इंडिया वापस आ रहे हैं। आप कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में रेड माइक के साथ जब आपने बात की सौरभ शुक्ला के साथ, आपने कहा आप इंडिया वापस आने से आपको स्ट्रेट तिहाड़ जेल लेके जाएंगे। नाउ यू आर डिसाइडिंग टू कम बैक टू इंडिया। I aren't you scared? What if they arrest you? Do you fear they may? आई नो देम, दे विल, because that is what happened to anybody who have chosen to speak up. Sonam Wangchuk is the latest example. Mm-hmm. तो मुझे तो लगता है कि हाँ, अरेस्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं भी अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो है उसको एक्सरसाइज करने आ रहा हूँ। Mm-hmm. The constitution gives me certain rights. Freedom of expression is one such. It also allows me to protest in a democratic and peaceful manner, which I will. So मुझे तो नहीं लगता है मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। Now they have to decide, are they, will they be acting according to the constitution? I mean, you okay, fine, I understand, but if they arrest you, you know they may. That's what you are claiming. You have said if you come to India, they may just send you to Tihar directly. Now you are saying when you come to India, in all probability, they would arrest you. So if they arrest you, will that make Abhijit Dipke a bigger hero? I don't know how will that make me a bigger hero, because I don't know when I will be out, right? मतलब लोग कुछ-कुछ महीने, कुछ-कुछ साल अंदर रहते हैं। तो मैं तो अपनी जो पूरा करियर है, यहाँ पर मुझे Hmm. क्या ज़रूरत थी? मैं Hmm. यूएसए में कोई भी जॉब लेकर रह सकता था आराम से। आई कुड हैव अ कंफर्टेबल लग्ज़रियस लाइफ हियर। Hmm. बट वो सब छोड़कर आ रहा हूँ मैं, तो अपने आप को हीरो बनाने के लिए तो नहीं आ रहा हूँ। इट्स अच्छा। इट्स अबाउट दैट थिंग कि हमारी कंट्री में अभी कोई अकाउंटेबिलिटी है नहीं, एंड वी नीड टू फिक्स द अकाउंटेबिलिटी। अगर इतना सब कुछ गलत होने के बाद भी किसी का रेजिग्नेशन तक नहीं हो पाता है, तो कल को ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, और एक डेमोक्रेसी के लिए वो एक बहुत गलत साइन होगा। अभिजीत पॉलिटिक्स में या फिर राजनीति में अगर बात करें, फर्स्टली मुझे समझना है, आर यू अ रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी नाउ? नो नो, वी आर नॉट। मतलब एज यू नो दिस वाज ऑल बोर्न आउट ऑफ सटायर, राइट? 15 दिन या ही हुए हैं। 15 दिन पहले तो हमें ये भी नहीं पता था हम प्रोटेस्ट करेंगे, राइट?
लेकिन अच्छा। पिछले 15 दिन में मुझे इतने सारे लोगों ने मैसेज भेजा कि हमने इसको बस एज अ सटायर ज्वाइन नहीं किया है, हम्म। वी ज्वाइन दिस एज अ सीरियस मूवमेंट and we हम्म। wanted to talk about serious issues, and now we are listening to all our followers and we are doing what they are asking us to do. Fair enough. But what is the future? Like a movement will have a vision. Through a movement, we have seen Aam Aadmi, Anna Hazari's movement. All Hmm. right. Now we saw Aam Aadmi Party born out of it. कल के हम लोग ये भी देखेंगे from this movement CJP as a political party fighting elections in India. It will be too early to say anything on that. मतलब हम लोगों का तो ऐसा कोई प्लान नहीं था, मतलब ये तो अपने आप में लोगों ने एक मूवमेंट बना दी है। अभी जो हमारा फोकस है वो ये है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज रहे, चाहे रूलिंग पार्टी रहे या अपोजिशन पार्टीज रहे, दे हैव फेल्ड टू एड्रेस द कंसर्न ऑफ द यूथ, स्पेशली द जेन जी पीपल। ना उनकी एजुकेशन कैसे अच्छी हो सकती है उस पर बात हो रही है, ना उनके जॉब अपॉर्चुनिटीज पर बात हो रही है, कोई एड्रेस ही नहीं कर रहा है इन चीज़ों को। तो कहीं ना कहीं जाकर एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स चेंज करना पड़ेगा, जहां पर हम फ्यूचर की बात करें। कल को ये लोग जाकर सिटीजन्स वोटर्स बनेंगे, सिटीजन तो ऑलरेडी है, वोटर्स बनेंगे, वो उनके लिए क्या क्या कंसर्न्स है, उनकी क्या क्या होप्स है, वो किसी ना किसी को तो बात करनी पड़ेगी। एंड बिकॉज कोई और नहीं कर रहा था, दैट इज वाई सो मेनी पीपल इन सच a huge number started supporting a party which was just supposed to be satire. Now it is the Mm-hmm. failure of the political ecosystem. Mm-hmm. उनकी फेलियर की वजह से लोग एक मजाक में बनी हुई पार्टी को सपोर्ट करने लग गए थे। सो इट्स अ So वेरी up, सीरियस क्वेश्चन। no, you in a way you're also saying that in this country, like the ruling party has failed people, opposition equally has failed people. That is the reason a satire is now trying to be the alternative opposition. Is that so? Yeah, what else explanation is there? What other explanation is there for this? Okay, so if you have to choose between Prime Minister Modi and Rahul Gandhi, will you make a choice or you will not choose either? We won't choose either. If there is a choice between Prime Minister Modi and Arvind Kejriwal, will you choose one or neither? Neither. Similarly, a Prime Minister Modi and Mamta Banerjee, will you choose anyone or no one? No one. So you are saying, like BJP, all other political parties have failed. Yes, they have failed the youth of this country. Okay. So if all the political parties have failed the country and you are looking at a movement, so basically you are looking at an uprise, a people's movement, right? Yeah. You're looking for an uprise? We just want to make the politics better. Anybody who talks about the issues of the youth, we are happy if they do it. वरना हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हमारा सिंपल एजेंडा है, वी वांट टू चेंज द पॉलिटिकल डिस्कोर्स एंड वी वांट टू कंपेल देम टू चेंज देयर पॉलिटिकल नैरेटिव्स, टू चेंज देयर पॉलिटिकल डिस्कोर्स एंड टू एक्चुअली एड्रेस द कंसर्न्स ऑफ द यूथ। So, Abhijit, what we saw in Bangladesh, what we saw in Nepal, is there a possibility that we see the same thing in India as well? No, not at all. What happened in Bangladesh and Nepal, we don't endorse that, because Okay. whatever we are going to do, we are going to do in a very peaceful manner, in a very democratic way. We just want to express our voices, we just want to express our concerns, and that's all. आपको लगता है आपको इतना opportunity मिलेगा? Like once you come back to India, you think you will get so much of time, opportunity Yeah, of to course. like? Why not? You think police would give you the permission? सी, मैं तो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के विदिन ही कर रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ। मैं तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर नहीं मांग रहा हूँ। तो अब उनको सोचना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में मुझे परमिशन मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। Abhijit, of course, our constitution is our God. To us, our constitution is the God. So that constitution has given us a lot of freedom. But at the same time, the fact is, Umar Khalid is behind bars without trial for 5 years. I mean, even he had said when he was protesting against BJP, it was his constitutional right. Today, you are saying you want to fight because that's your constitutional right. And you are saying that you may be arrested. Yes, I'm fully So, aware of that. okay. So, what happens to the constitution then? Now it's for the people to decide then.
The one who are running the country, the one who are sitting in the opposition, and the citizens of India. Where are we heading towards? Okay, is the constitution safe, Abhijit? Well, there are attempts being made to, to make this country shift away from being a democratic country. And I don't endorse that, because for me the constitution is the most supreme, and India should always remain a democracy where nobody should have an absolute power to go after anybody who just exercise their fundamental rights, something as minimal as freedom of expression. Mhm. Abhijit, BJP, and I would name Kiran Rijiju. He's a minister. He has said that 94% of your followers are Pakistanis. In a way, insinuating that it could be deep state, you could be an agent, or there could be a foreign hand behind your movement. How would you defend yourself? I think you didn't see the tweet I made while quoting Kiran Rijiju. I I saw put up it. I put up a screen recording showing Mhm, the data. mhm, 94.7% of the followers were from India. Now, I don't know why the Union Minister of India is labeling 94.7 Indian youth as Pakistanis. That is so sad and disheartening. Why would you label your own citizens as Pakistanis? Instead of labeling anybody who questions the system, why don't you just address the issue? I mean, Vedant, who is a 17-year-old kid, the CBSC kid, he was called a Pakistani by some DD News anchor. mhm. So, what are we doing with these children? Are we going to label everybody as Pakistani, whoever questions the government? Are you an anti-national? I am very much Indian, and I'm a proud Indian. I love my country, and more than, and I believe in the constitution of in India more than anything else. And I don't need the certificate from the BJP about my patriotism. Okay. Has BJP done anything good according to you? Well, they should tell us if they have done anything good, because they clearly haven't been able to. Okay, but to you, has BJP, if BJP has failed the country, which are the five things that they should have done better or could have done better because they are in power for the past 12 years? First thing I would like to address is the employment. India had one of the largest young population in the world, which could have been turned into a workforce. Mhm, But because of the narrative of the ruling party, which was majorly, focused on communal politics, somehow mhm, we wasted this golden opportunity to convert this young population into a workforce. Today, India's unemployment rate is highest in last 40 years. mhm, That is the one failure. Second failure would be the public infrastructure. You would have seen every other day we see news of some road breaking down, some bridge collapsing, people dying. What on earth is happening? I mean, how could such complete collapse of public infrastructure can happen in a country which claims to be world's fourth largest economy? That is such a sad thing. Third thing would be clean air, clean water. These are basic amenities. Our citizens don't have basic amenities such as clean air and clean water. In every major metropolitan city, we see how polluted the air has become. What are we doing to address that? We are doing nothing. And the fourth thing would be the complete collapse of the education system. This is not the first time that the NEET paper has leaked. I think in the last 5 or 6 years it has leaked 4 times. And despite of that, the government has unable to fix that issue. And it's not just limited to NEET. NEET is a very prestigious examination. When you look at the examination which for which the rural youth applies, like the police constable exams and railways exam, those are even more worsely managed, where paper just not get leaked, but also the results it takes 2 to 3 years to arrive. What are these youth supposed to do in those 2 3 years? They have a certain age limit to apply, and they keep waiting. Well, Abhijit, you may have 22 million followers on Instagram, bigger than BJP as a political party. But how confident are you on the Indians, the citizens of the country? Because आपको आपको अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन जो लोग रास्ते पे कोई
रिलीजियस झंडा लेके घूम रहे या फिर नारे लगा रहे या फिर रिलीजन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे, वो भी इंडियन है। उनके उनको उनको छोड़ के हमारा देश इनकम्प्लीट है, राइट? वो भी इसी देश के हिस्सा है। सो आप बात कर रहे डेवलपमेंट की, आप बात कर रहे एजुकेशन की, पर उसी देश के लोग बीजेपी को वोट भी दिए हैं, नहीं, मुझे उन्हें लगता है भरोसा है। ये जो चल रहा है, हम्म। ये ना एक मेनस्ट्रीम मीडिया का नैरेटिव है। हम वही देख रहे अच्छा। हैं जो हमें मेनस्ट्रीम मीडिया दिखाना चाहता है। अच्छा। अब मेनस्ट्रीम मीडिया वही चीजें दिखाएगा तो लोगों को यही लगा कि यही चल रहा है। और अगर बीजेपी जीत भी रही है तो बीजेपी कैसे जीत रही है? कैसे जीत रही है? हर स्टेट में इलेक्शन कट डिलीट हो रहे हैं। बंगाल में 90 लाख वोट डिलीट हो गए, 27 लाख वोटर्स कोड गए थे, लेजिट वोटर्स जो बोल रहे थे हमें वोट करने दिया जाए, उनको वोट नहीं करने दिया। हम्म। दिल्ली में वोट कट हुए, तमिलनाडु में वोट कट हुए, महाराष्ट्र में वोट डिलीट हुए, हरियाणा में भी हम्म। सेम चीज हुई है। मतलब जहां जहां आप देखोगे, बंगाल में ममता बनर्जी की सीट पर कुछ 50,000 वोट डिलीट हुए, वो 15,000 वोटों से हार गई। हम्म। तमिलनाडु में एम के स्टालिन की सीट पर 1 लाख वोट डिलीट हुए, वो 50,000 वोटों से हार गए। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सीट पर 40,000 वोट डिलीट हुए, वो कुछ 4-5 हजार वोटों से हार गए। और जो महाराष्ट्र है जहां से मैं आता हूँ, 2024 में इन 2024 लोकसभा इलेक्शंस, द बीजेपी was reduced to 9 seats out of 48, यस। and within 5-6 months there were assembly elections. हम्म। They get brute majority with 132 seats. How is that possible? उतने सीट्स उनके नरेंद्र मोदी की पीक वेव पर भी नहीं आए थे। तो ऐसा क्या हो गया इन 4-5 महीनों में? लीडर्स भी वही थे, वोटर्स भी वही थे, तो इतनी ज्यादा सीट्स कैसे बढ़ गई जो आप अपनी पीक वेव पर नहीं लेकर आए थे? और जब आपके पास शिवसेना जैसा एक स्ट्रॉन्ग अलायंस था तब भी नहीं लेकर आए, तो आपने पार्टियां तोड़ी, आपने वोट डिलीट करे, ऐसे तो आप लोग जीत रहे हो। तो हमें क्यों नहीं लग तो लोगों को क्यों नहीं लगेगा कि बीजेपी जीत रही है? यही नैरेटिव चल रहा है, एक तरफ मीडिया ये दिखाती है और एक तरफ से वोट डिलीट होते हैं। अच्छा, तो आप कह रहे हो क्या वोट चोरी हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। अभी आपको कोई बोलेगा आप कांग्रेसी हो, क्योंकि वोट चोरी का नारा राहुल गांधी ने दिया। नहीं, नारा कोई भी दे दे, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो बात सच नहीं है। अच्छा। या तो आप प्रूव करके दिखा दो कि नहीं है। तो प्रूफ करने के लिए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए। आपको लगता है देश के सारे नेताओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, इंक्लूडिंग द प्राइम बिल्कुल मिनिस्टर? करना चाहिए, और उसके लिए इलेक्शन कमीशन ने भी पूरा डेटा देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन पूरा डेटा नहीं देता है वोटर लिस्ट का। ऐसी वोटर लिस्ट दे रहे जो रीडेबल नहीं है। ये बात तो सच है, बहुत सारे डेटा हम लोगों को अभी तक रीडेबल डेटा नहीं मिला है। बंगाल के इलेक्शन के बाद अगर इलेक्शन रिजल्ट्स को स्टडी करने चाहे तो बहुत दिक्कतें हो रही है, क्योंकि हम लोग उसको पढ़ नहीं पा रहे। स्कैन स्कैन का जो रेजोल्यूशन है, आउटकम है, बहुत खराब है। और ताजुब की बात है, सीबीएसई की जो रिजल्ट्स है उसमें भी एग्जैक्टली, वहां पर भी यही हो रहा है। या सेम मोडस ऑपरेंडी। so you are saying there is dhandli going on, there is absolute Absolute corruption. hardly going on, and that is why we need to seek some accountability. Okay, I get your point, but this question would come your way, Abhijeet. Why now? We have seen Manipur burn for the past 3 years, from 2023. Where was Abhijeet Dipke then? You can open my SIR happened in Bengal. Let you me can let me open ask my you Twitter. this. Let me ask you this question, please. SIR happened in Bihar. SIR happened in Bengal. There had been political violence in Bengal, in other parts. So when you talk about wrongs, there had been many wrongs plaguing the country. Where was Cockroach Janta Party? Where was Abhijeet Dipke then? I'm not saying why now, but where were you then? Open my Twitter. I have spoken against whatever has been happening in Manipur relentlessly. I have spoken against the electoral malpractices in Bengal relentlessly. Even after the whatever happened, the violence in West Bengal, the bulldozer, Hmm. that was not justified. That was not okay. I have spoken it about that as well. Mhm. Now, if you will ask me where was Cockroach Janta Party, now that you will have to ask the Honorable Chief Justice of India, because he made that comment, and it was from that comment the inception of Cockroach Janta Party happened. But as an individual, Abhijeet Dipke has been very vocal about it. You can go on my Twitter. I have not deleted any single tweet like Raghav Chadha did. Everything is there on my platform.
Okay. So you are saying if Chief Justice of India, Surya Kant, had not made that cockroach comment, Cockroach Janata Party wouldn't have won. Yeah, because see, I did not intend this. Okay, all I did was reacted to that comment because I was really upset. How can the Honorable Chief Justice of India, who is the custodian of the Constitution, which grants us the freedom of expression, can compare us with cockroaches and parasites just for expressing our opinion? So I just made a simple post on that too on my personal account. What if all cockroaches come together? Now I received a huge response from the young people, the Gen Z especially, who said, Hmm. yes, let's all come together, let's create our own platform. And that is how the idea got into my head. How about Hmm. launching Cockroach Janata Party? Hmm. So this all happened very accidentally. None of this was planned. Hmm. Many people have been doing this murmurs, talking about it, that you are funded by Aam Aadmi Party, and this has happened now because Punjab elections are there by end of this year, hopefully, and Aam Aadmi Party is in power in Punjab. So you are a shadow boxer for Aam Aadmi Party. How would you respond? I don't know, like, did the Honorable Chief Justice of India deliberately made this comment so that I could start something like this? I mean, what are the basis of this? And the second thing, is NEET, whatever happened in the NEET exam, is only related to Punjab? Is CBSE only related to Punjab? There are 22 lakh students in NEET. There are 17 lakh students in CBSE. CUET, there are another 16 lakh students. These are 50 lakh students across India. How can you just, just to slander Abhijit, why would you dismiss the concerns of more than 50 lakh students? If you don't see the frustration, the disappointment of the students, and you are just Hmm. going to use this, my past background, to somehow discredit the movement, then you're repeating the same mistake of not listening to the youth. So please don't do that. Abhijit, I know you have stayed up the whole night, and I won't take much time of yours. But Abhijit, towards the end, I just want to understand, when you say that you want to awaken the youth, you want to do this, do that. Fair enough. But Let do me you correct think? on that. I'm not trying to awaken the youth. The youth is pretty much awakened, and they are the Okay. ones who have taken this initiative to make this platform big, because I never made any single call until the first 2 or 3 days to follow this party or something. I just Mhm. made a random post. It's the youth who came forward, But and now आप they, चाहोगे ना, you would want people to join you when you come to India, of course, airport of से आप course, निकलोगे. of course. ओके, सो उसका कुछ कॉल आप दे रहे हैं किसी को कि आप लोग आ जाइए जंतर मंतर में? यस, हम तो सोशल मीडिया पर पूरा पोस्ट कर रहे हैं, तो अच्छा. एवरीबडी इज फ्री टू ज्वाइन। जितने भी हमारे सपोर्टर्स हैं, एंड वी वांट टू मेक इट क्लियर, जो भी आएगा, they have to be believers in the Constitution of India, and they need to be peaceful. We won't tolerate any illegal activity. But what if there is any violation of peace? There won't be. I mean, there is this narrative which is already being created to just discredit and dismiss the movement. Okay. Yeah. Okay. So you are saying you will take complete responsibility of peace when you come back and when people assemble. Yes. Because whatever we are going to do, we are going to do within our constitutional rights and in a very peaceful and democratic manner. Do you fear there could be some conspiracy to kind of provoke people to inject violence so that you can be arrested or you can be held responsible? Why would there be violence or provocation when we are just asking the resignation of the education minister? You are asking the resignation of the education minister. Today you are asked the resignation of education minister. कल तो आप होम मिनिस्टर के भी रेजिग्नेशन मांग सकते हो, प्राइम मिनिस्टर अरे, की भी मांग सकते हो. आप काम ठीक से करो, हम नहीं मांगेंगे ना। मतलब आप क्या चाहते हो, हम रेजिग्नेशन ना मांगे? 5 बच्चों ने सुसाइड कर दी, रेजिग्नेशन हम्म. नहीं मांगा जाना चाहिए? इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? मुझे तो मालूम है देश में तेल का दाम बढ़ रहा है और अ, बहुत सारे लोगों की बहुत सारी परेशानी भी हो तो रही है. रेजिग्नेशन नहीं मांगा जाना चाहिए किसी से? ओके. तो मतलब क्या करें? हम एक काम करते हैं, इलेक्शन बंद कर देते हैं। हम इलेक्शन ही क्यों करवाए फिर? अगर हमें जो लोग बैठे हुए जो वो डिसीजंस ले रहे हैं वैसे एक्सेप्ट करने हैं, या फिर जैसी चीजें चल रही है वैसी चलने देनी है, तो व्हाई इवन हैव इलेक्शंस? अकाउंटेबिलिटी होती है ना इलेक्शंस में। आपको इलेक्शंस पे भरोसा है?
मुझे तो डाउट हो रहा है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर है या नहीं अभी। आपको देश में कोई भी इंस्टीट्यूशन पे भरोसा है? आई बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। डू यू बिलीव इन इंस्टीट्यूशन? आई सेड आई बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड I hope that if there is any institution left that follows the constitution, I'm happy to endorse it. But yeah, my Do guide you will be the think? Constitution of India. Very good. Okay. Do you think there are institutions upholding the constitutional values, There's or there are there no is institutions left? there are big question marks and on the integrity of constitutions in India. What about Election Commission of India? You trust Election Commission of India as an institution? When the chief election commission officer gets appointed as the chief secretary right after the elections, like how can I now doubt that? Okay. What we have seen in West Bengal. Uh-huh. So that raises serious questions on the impartiality and integrity of the election commission as well. So आपको लगता है इलेक्शंस और होना ही नहीं चाहिए, छोड़ देना चाहिए? नहीं, मुझे तो लगता है फ्री एंड फेयर होनी चाहिए। फ्री एंड फेयर करवाओ ना। अच्छा। ऐसे रिग्ड इलेक्शन का पॉइंट क्या है? बीजेपी तो कह रहा है सब कुछ फ्री एंड फेयर है, ये लोगों की जनमत है। 2024 में उनके साथ नाइंसाफी हुआ, उनके नंबर्स कम हो गए, और इसके लिए लोग आक्रोश में आके हर एक स्टेट में उनको जिता रहे। अच्छा, 2024 में कम दिए थे इसलिए लोग नाराज हो गए, इसलिए ज्यादा सीट दे रहे हैं। ये क्या लॉजिक है? जेपी नड्डा ने कहा, प्राइम ये मिनिस्टर ने कहा खुद। मतलब ये लॉजिक आप किसी 19-20 साल के बच्चे को भी बता देंगे ना, वो भी हंस देगा इस चीज पर। आप हंसोगे, आपको एंटी नेशनल बोलेगा, आपका जिम्मेदारी है, मुझे मत हंसाओ और फंसाओ। देखो, मुझे किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए मेरी पेट्रियोटिज्म का। अच्छा, ये मुझे एक चीज बताइए, मेन स्ट्रीम मीडिया पे आपने बहुत सारी टिप्पणियां की, तो ये मेन स्ट्रीम मीडिया क्या, ये तो बहुत सालों से है, आप लोग जो भी कह लीजिए, कोई गोदी मीडिया बोलता है, कोई कुछ भी बोल दे, लेकिन लोग फिर भी उन्हें ही देख रहा है, वो अमीर हो रहे हैं। आपको क्या लगता है, अगर कल आपके पास पावर हो, तो आप मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ क्या करना चाहेंगे? यार, मुझे लगता है ये जो मोनोपोली और डुओपोली हो रखी है ना, वो नहीं होनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि जब एक स्पेसिफिक लोगों के पास पूरी मीडिया का कंट्रोल हो, 2 लोगों के पास इतने सारे चैनल्स हो, तो आप तो हिप्नोटाइज कर रहे हो ना पब्लिक को, जो आप बताना चाहते हो उससे। अच्छा, वो नहीं होना चाहिए। आपका फेवरेट कौन है मेन स्ट्रीम मीडिया में? कोई भी नहीं। किसे आप सबसे ज्यादा फॉलो करते हो? किसी भी नहीं। मैं मेन स्ट्रीम मीडिया देखता ही नहीं हूँ, और मैं इंटरव्यू भी अच्छा, इसलिए आपको दे रहा हूँ किसे क्योंकि आपको सबसे ज्यादा नापसंदी है, किसको? मैं देखता ही नहीं उनको। कोई आपको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाएगा फिर इसके बाद? मुझे बुला रहे। अच्छा, हाँ। तो पैसा ऑफर किया क्या आपको? पैसा कौन ऑफर करेगा मुझे? मीडिया वाले इंटरव्यू दे दीजिए टीआरपी के लिए। पैसा तो ऑफर नहीं किया है, बट बुला जरूर रहे हैं। कौन, किसने किसने बुलाया आपको? सभी चैनल्स ने बुलाया, लेकिन वही पॉइंट है कि ये वही लोग हैं, जब कोई भी यूथ अपनी बात रखता है, उसकी पैट्रियोटिज्म पर क्वेश्चन करते हैं, उसको एंटी नेशनल डिक्लेयर कर देते हैं, तो मतलब क्या पॉइंट है? ओके। आप एक जो आवाज छेड़ा है आपने सर, ये बीजेपी के खिलाफ, और बहुत सारे लोग कहेंगे कि बीजेपी के खिलाफ इसीलिए है क्योंकि बीजेपी पावर में है, सत्ता में है। तो किसी ने अप्रोच किया अभी तक आपको किसी माध्यम से कि चलो अभिजीत बच्चा आप चुप हो जाओ, कुछ सेटलमेंट कर लो, एडजस्ट कर लो, आप बाहर में हो, बॉस्टन में हो, थोड़ा आप हमारे बारे में सोचो, हम आपके बारे में सोचेंगे, ऐसा कोई नौबत आई क्या? ऐसी तो आई नहीं, धमकियां काफी मिली है अनोनिमस नंबर से। अच्छा। तो मुझे लगता है वही उनका सेटलमेंट का तरीका है कि चुप बैठ जाओ वरना देख लेंगे। अच्छा, और आप चुप नहीं बैठोगे? क्यों बैठूं मैं? मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया है। ओके, और अगर अगर आपको अरेस्ट कर लिया तो आपको इसमें इसमें भी कोई ऐतराज नहीं है? नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है। लद्दाख में भी ऐसे ही प्रोटेस्ट चल रहे थे, उसके बाद सोनम वांगचुक जी को अरेस्ट किया गया नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत, उसके जी। बाद सारे जो आरोप है वो खारिज हो गए, वो अभी बाहर आ गए। एग्जैक्टली। आपको आपको शक है, शंका है, ऐसा आपके साथ हो सकता है? हाँ, कोशिश पूरी करेंगे, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं जो भी करूंगा अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन करूंगा। आप मेरे कि कहीं से भी आपको अगर लगा मेरे इंटरव्यू में कि मैं कुछ प्रोवोकेटिव बोल रहा हूँ या एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बोल रहा हूँ, तो आप बता दीजिए। मैं तो पूरी तरह कह रहा हूँ, आई एम अ वेरी पीसफुल पर्सन। एंड यू आर नॉट स्केयर्ड ऑफ यूएपीए, अगर आपके ऊपर लगा दे तो?
सी वो तो उनके ऊपर है यार। मैं तो अपना जो एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री जो मुझे राइट्स मिले हैं वो मैं एक्सरसाइज करूंगा। अगर उन राइट्स को एक्सरसाइज करने के लिए मेरे ऊपर यूएपीए लगा देते या कुछ और लगा देते तो आपको पता चल जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन कौन फॉलो कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। पर ये सडनली आपने जो डिसीजन लिया, आई मीन ये बहुत सारे लोग कह रहे थे देखो अभिजीत तो बॉस्टन में बैठे हुए हैं, बॉस्टन में बैठ के एक्टिविज्म कर रहे हैं। आप खुद सोच रहे थे कि आपका कुछ अच्छा जीवन हो, जिंदगी हो बाहर में, इंडिया में वापस आने का कोई सोच ही नहीं था। अचानक ने ऐसे सोच क्यों लिया कि हम अभी वापस चले जाएंगे? आपको लगता है कि उधर खतरा है, लेकिन फिर भी आप वो यू आर टेकिंग दैट चांस, व्हाई? somebody has to, right? somebody has to take a chance। कब तक डर कर जिएंगे? देश कुछ चंद लोगों का नहीं है ना, देश हम सबका है। और कब तक डर कर जिएंगे हम? why should we ओके। why should we be scared to speak up against anything that is wrong happening in the country? And do you fear if you get arrested, your movement would also fizzle out? No, I don't think so. I think the people will carry it forward. What you're saying is actually reminding me of the dialogue from Rang De Basanti. The fire that you have ignited in our hearts and minds will not die down. And that happened after Amir Khan and the other two characters, they were killed, they were shot dead. See, I what I'm mean, saying is that none of this was intended, right? You need to understand this. None of this was intended. मैं अगर प्लान करके भी करता ना ये चीज नहीं हो पाती। ये अपने आप हुआ है। अब जब कोई चीज अपने आप हो रही है इसका मतलब लोग कुछ कहना चाहते हैं। द पीपल आर गिविंग सम मैसेजेस। आप लोग वो मैसेज समझ नहीं पा रहे हो। द मैसेज इज क्लियर दैट पीपल आर फेड अप ऑफ द रूलिंग पार्टी and they want some accountability, they want some course correction. Don't take and the this people for granted. true. And this demand is limited to only Dharmendra Pradhan या फिर उसके बाद और कोई है लिस्ट में? पहले ये तो रिजाइन कर दे। यानी लिस्ट और लंबा है। हाँ, पहले ये तो रिजाइन कर दे, इनको तो रिजाइन कर देना चाहिए। अच्छा नहीं, फिर तो थोड़ा थोड़ा इशारों में बोलिए, इसके बाद किसका नंबर है आपके दिमाग में? नहीं नहीं, अभी तो कोई ऐसा हमने सोच कर नहीं रखा है। एज ए सेड, अभी जो सबसे ज्यादा स्ट्रेसिंग इशू है, देर आर लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स हु आर लाइक वेरी एंशियस, वेरी डिप्रेस्ड फॉर वॉट एवर इज हैपनिंग इन द एग्जाम्स। तो अभी सबसे पहले तो उनके कंसर्न्स एड्रेस करने पड़ेंगे ना। Okay. You think you would want to meet the Prime Minister when you are here in India? आई डोंट थिंक द प्राइम मिनिस्टर वुड लाइक टू मीट मी। But would you want to meet the Prime Minister? आप एक famous इंसान हो। No, I don't think the prime minister would want. It doesn't matter what I want. I'm being labeled as a national security threat just for expressing my voice. So does it really matter what I want? But what if the Prime Minister agrees? I'll ask him to sack Dharmendra Pradhan because he has been a really incompetent minister. Okay. And if he says no? Then I'll again come back to Jantar Mantar. Is there anything in particular you would want to have a discussion on with the Prime Minister? No, just one thing: sack Dharmendra Pradhan. Okay. Do you think the those who say that corruption would be removed, those who call everyone else corrupt, they should be the epitome of transparency and take accountability for what is happening with the education system here? You think the Prime Minister should have come forward and issued a statement by now? Yes, why not? I mean, after all, he's leading the government, right? And it's his responsibility to fix the accountability. If any minister is not being competent and is failing to do his job, the prime minister needs to take action against that minister. So on one hand, you have the education system which is under challenge. On the other hand, you have a huge population, youth, trying to be the crusader and save religion. Do you think this is a modus operandi going on? No, I don't think. Again, as I said, हम लोग वही देख रहे हैं जो हमें मीडिया दिखाना चाहता है। हमें कुछ लोग दिखते हैं जिनकी आप बात कर रहे हो, हमें वो लोग क्यों नहीं दिख रहे बार बार जो 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे हैं। वो कहाँ पर है मेन स्ट्रीम में? मतलब वेदांत, सार्थक, निसर्ग, ये 3 बच्चों ने पूरे एजुकेशन सिस्टम को एक्सपोज करके रख दिया। ये काम तो मीडिया का था ना, मीडिया क्यों नहीं दिखाता? आपकी कंट्री में अभी 1 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स परेशान हैं। अगर मैं पूरा डेटा मिलाकर बात करूं तो
सीबीएसई का, नीट का, सीयूईटी का और एसएससी जीडी का 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे हैं। कोई बात ही नहीं कर रहा, मीडिया कुछ कर ही नहीं रहा है, मीडिया एक्सपोज कर ही नहीं है। इसलिए जो बच्चे एग्जाम का प्रिपेयर कर रहे थे, सार्थक, वेदांत, निसर्ग, उनको खुद ये एक्सपोज करना पड़ा। I think we are focusing on the wrong things. What we need to do is to focus on the right things. There are many good people in this country. Majority of the people are good in this country. They are very nice, very kind, very smart. But the media is somehow distracting us from those people. मीडिया बहुत कुछ काम कर रही है अभिजीत. आई एम सॉरी टू डिसएग्री. मीडिया इज टॉकिंग अबाउट मेलेडी चॉकलेट. व्हाट आर यू सेइंग? Yeah. I mean, these are the things. 5 बच्चे कर रहे हैं नीट के पेपर लीक की वजह से, और हम बोल रहे हैं मेलेडी चॉकलेटी क्यों है. मीडिया ऐसा दिखा रही है, वो होता नहीं है कि बाहर बहुत ही बड़े दादा बन चुके हो आप, लेकिन आपसे आपका घर नहीं संभाला जा रहा. बाहर अच्छा. आपकी बहुत चलती है, लेकिन अपने घर में ही आपकी नहीं चल रही है. वो वाला हाल हो रखा है यहाँ पर. ओके, लेकिन बाहर जब हमारे देश के लोग, देश के प्रधानमंत्री जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो प्रधानमंत्री को देख के इंडियन फ्लैग लेके वो लोग चिल्लाते, नाचते, गाना गाते, आरती करते, कहते कि हम आजाद हो गए, हमारे हमारे भगवान आ गए, देश कहां से कहां पहुंच गया, अरे तो तरक्की आ कर जाओ लिया. अपने देश वापस, बाहर क्यों रुक रहे हो? अगर आप इतना ही सब कुछ सही हो गया है तो बाहर क्या कर रहे हो आप? आओ उनके राज में रहिए, एक्सपीरियंस करिए. वाई यू स्टिल लिविंग आउटसाइड? मैं तो आ रहा हूँ वापस, ऑल्दो मैं काफी डिफरेंट रीजंस के लिए आ रहा हूँ. चलिए आप आइए, आप देश में वापस आइए. ये घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे. लेकिन उसके बाद क्या होगा ये आपकी जिम्मेदारी, बिकॉज nobody knows what's going to happen on June 6th, and you are saying you're apprehensive that you may get arrested, and at the same time you are saying people should come and join the movement and it would be a peaceful protest. But agar kuch ho jata hai by any chance, my question is again, I have a very kind request. hmm We are a country hmm that was formed by movements. ये क्या मतलब लगा रखा है यार मूवमेंट के नाम से? हम लोग इतना डरने क्यों लग गए? व्हाई वी हैव मेड सच अ बैड थिंग आउट ऑफ मूवमेंट्स, पब्लिक मूवमेंट्स? वी आर द सेम कंट्री दैट फॉट फॉर 50 more than 100 years through movements and got our independence. We are the same country that fought through the emergency through movements and restored democracy in our country. आज अचानक से मूवमेंट्स को ऐसा खराब क्यों बना रहे हो यार? आप लोग ऐसी बात करते हो ना, इसलिए लोग बाहर आने से डरते हैं. दिस शुड बी स्टॉप्ड. हमारे कंट्री के खून में मूवमेंट लिखा गया है. महात्मा गांधी, अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, मूवमेंट से चलाई थी ना सबने. एकदम. और ये जो लोग आज बोल रहे हैं मूवमेंट्स खराब होती है, इमरजेंसी के वक्त ये क्या कर रहे थे? वेरेंट दिस द सेम पीपल? ये भी तो मूवमेंट से चला रहे थे. तो आज हम लोग मूवमेंट्स को इतना खराब क्यों बना रहे हैं यार? This country has been formed by movements, and the democracy in this country has been kept alive because of the movements. Abhijeet, it is very important that we ask certain questions which many would say critical, but those questions are again would give clarity to people before they trust you. And my last question to you is, when you say it is a movement, no movement can survive without without funding. Let's admit, if I have to write something on a chart paper would cost me 10 rupees. If I have to use a sketch pen, that would cost me 10 rupees. पैसा लगता है. So what kind of financial arrangement do you have to carry this movement forward? Is that a fair question? अगर मुझे एजुकेशन मिनिस्टर के रिजाइन करने के लिए फंडिंग की जरूरत पड़ी ना तमाल, तो वो हमारे देश की डेमोक्रेसी के लिए बहुत खराब बात है. अच्छा. ओके. मतलब कोई मिनिस्टर अपना काम नहीं कर रहा है और उसको रिजाइन करने के लिए हमें फंडिंग की जरूरत लगनी चाहिए? इसके लिए तो वही चीज काफी है जहां पर ये सारे बच्चे आकर बोल रहे हैं कि यार हमारे साथ गलत हुआ है. दैट शुड बी इनफ. क्यों फंडिंग चाहिए? मतलब क्या चल रहा है ये? हम कहां लेकर जा रहे हैं डेमोक्रेसी को? आई एम सॉरी बट आई डोंट अग्री विथ योर आइडिया.
No, it's okay. I'm just asking you the question because there are several people who have this doubt in mind कि जैसे किसी ने आपको बीजेपी की तरफ से पूछा कि आप पाकिस्तान के सपोर्ट से ऐसे कर रहे हो, डीप स्टेट है, एंटी प्रूव नेशनल करके है। दिखा दे, प्रूव करके दिखा दे। ओके, एजुकेशन लोन अब लिया है मैंने इंडिया से। वो वो भरना है मुझे अभी। अरे अभिजीत, मैं अपना पर्सनल सुनाऊं, मेरे को तो सब बोलते हैं मेरा कलकत्ता में 4-5 घर है, एक का ईएमआई देते देते थक गया। I mean, yes, there are certain things you can react on. There are certain things you can just ignore. But obviously, if this is a movement that would shape the future of India, I mean, all the best to you, all the best to the country. But when you come to India, when you come back to India, we will be there, of course, Thank you. covering the story. Thank you. Is there anything you would want to tell to Just the one people? thing, don't be afraid to speak up. We live in a democracy. The Constitution has given us the right to freedom of expression. And speaking up is not wrong. It's not anti-national. It's your fundamental right. And if you care for this nation, and if you want this nation to be always remain a democracy, please speak up. Okay. Okay. And Abhijeet Dipke is saying this, asking people to speak up. He himself is coming back to India, and he made a very strong point. Those who are celebrating India's success outside India, they should come back to India. Now, he is coming back to India. And yet, if somebody questions his patriotism, should probably think twice. And what happens when he comes back to India? Well, he says there could be anything happening from his arrest to somebody trying to quell the movement. But nonetheless, he has made up his mind he would come back to India on 6th of June. What happens on 6th of June? Only time would say. But for now, we wish you good luck, Abhijeet. Take some rest. Thank you. And hope to catch up with you in person if you are not in jail. Once you are in India, तो I mean, मेरे को भी जेल में भेज you दिया can because request I've the court to interviewed interview you. me from the jail. Sorry? You can request the courts to interview me from the jail if that's an option. I don't know. मुझे बोलेंगे आप भी जेल में चले जाओ, एक एंटी नेशनल गया, दूसरों को भी भेज दो. Anyways, thank you so much, Abhijeet. Thank you for connecting with us. Wish you all the best. Take good care of yourself. Thank you.